I welcome all of you on Yourpedia education platform, and you must have seen the videos related to yesterday declared your HPCL mass recruitment. उससे पहले अभी आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम की डेट्स की वेट कर रहे हो, मे बी इन द मार्च or April you will have that exam, and maybe after 2-3 months you will have HPCL ka exam. And this year 2021 I told you you can expect so many recruitments from public sector and all, because last year was shut down for everyone. तो पिछले साल सीट्स नहीं निकली, इस साल निकलनी है. You guys should be busy with preparation, busy with positivity and optimism कि हमें जॉब लेना है. बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ये बोलते रहते हैं कि अगर पीएसयू प्राइवेटाइज हो रहा है तो भाई ये मास रिक्रूटमेंट फिर क्यों चलेगा. जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में आया, एचपीसीएल में आया, व्हाई दिस इज देयर. इफ यू आस्क मी प्राइवेटाइजेशन होगा तो आंसर इज यस, बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है प्राइवेटाइजेशन करना है. गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है. एंड गवर्नमेंट अनलाइक इनिशियल अर्लियर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ही यूज कर रही है. दैट मींस गवर्नमेंट अपना लार्जली स्टेक बेच देगी. डिसइन्वेस्टमेंट में लार्जर शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट के पास नहीं होता. प्राइवेटाइजेशन में वो प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाता है. सो गवर्नमेंट इज बेसिकली inclined कि हम इसको प्राइवेटाइज कर दें. That is there. Then if government is planning to privatize, then why massive recruitment in these organizations? And now you think of, if you are a chief executive officer of HPCL और ONGC, आपको शो तो रन करना ही है ना, चाहे ओनर गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट कोई प्लेयर है और कैपिटलिस्ट कोई बिग शॉट प्लेयर है, वो प्राइवेट प्लेयर इसके चीफ जो मैनेजमेंट में ऊपर आ जाएं. बट शो तो रन करना है, सीईओ को तो अपना काम चलाना है, तो ही इज रिक्वायरिंग द एम्प्लॉइज, उसको तो रिक्रूटमेंट करना ही है. सो रिक्रूटमेंट नहीं रुकेगी, चाहे प्राइवेटाइज हो चाहे डिसइन्वेस्ट हो, रिक्रूटमेंट तो होनी ही है. काम चलाना नहीं है क्या उसमें? मेरा आपको एडवाइस ये है कि अभी बहुत मत सोचो. डू नॉट थिंक मच अबाउट वेदर इट इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड और नॉट प्राइवेटाइज्ड. हमें तो यार जॉब लेनी है. सपोज गवर्नमेंट एंड एवरी पब्लिक सेक्टर गेट्स प्राइवेटाइज्ड, सपोज, then what you have decided to remain unemployed for rest of your life, or you want to get into some job? And private sector jobs are also good, I am telling you from the very beginning. And this HPCL is a public sector which is recruiting you. कल को ये प्राइवेटाइज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. You understand that? So prepare with that mentality कि अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करता हूं, बाद में वो प्राइवेटाइज भी हो जाता है, then also my interest will be taken care of. And I also want you to develop one attitude कि आपको जो ग्रोथ मिलेगा लाइफ में, वो आपकी नॉलेज एंड स्किल एंड कमिटमेंट की वजह से मिलेगा. So the kind of growth you are going to get will be on the basis of skill which you develop, the knowledge which you have, the commitment and the attitude you have in your life. So get into these organizations, develop the skill, become knowledgeable, and then you will always have your value. Whether from HPCL, Adani Group takes you, Ambani Groups takes you, or Shell takes you, or any other company takes you, they will give you the salary as per your capability. And private sectors can give you huge salary. If you're getting 1 lakh here, they can give you 2 lakh rupees if you're capable. So with that mentality, you please join these organizations. Prepare well for this, unmindful, without any worry that whether this will be privatized or not. Negative thinkings are there, negative people are there, negative voices will be there. Don't think, don't entertain that. Just keep preparing कि मेरे को अच्छी जगह करियर बनाना है, जॉब लेना है, एफर्ट करना है. फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, मेरे को एफर्ट करना है, मेरे को ग्रो करना है. With that mentality, please join it. So why massive recruitment? Because obviously show is to be run. Will they be privatized sometime? Yes, government is saying sometime they have to get privatized or disinvested. Will that affect me? Yes, if you don't do anything even after joining these organizations, that may affect you. But if you do your job properly, you will always grow. That will not affect you. And you know what? There are so many examples of people who join these organizations, leave these organizations, join private sector, run their own show. People like me, and there are so many others who joined the prestigious jobs like DRDO, ISRO, engineering services and all, left those jobs and then got into private sector, learned from there also, and then now they are running their own show. So if you are capable, if you are ready to put effort, you have nothing to worry. You can become very good entrepreneur in future. So be positive, give your 100%, get into there. Then later on we will see how our career is going to grow if we put effort. Fine. So be positive. And yes, if you are serious for HPCL and all, I have already told in my previous video, there's a Google form attached here.
fill up your details. You are going to get some kind of study stuff from your PDI. Your PDI is going to make you prepare for HPCL in detail. So after Airport Authority of India, we are planning to run the tailor-made module for this HPCL. I will declare that very soon how that preparation will be done. It's a good opportunity for us. Let's crack it. Thank you.